Hello, students, and parents also, if they are present. So, today's topic for this session is stress management, which is stay physically and mentally fit. So, guys, before starting, I would like to go through you with a test and see how physical fit we are. तो अभी क्या है कि विद ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बट आई वुड रियली वांट कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आप लोग ये दोनों चीजें करके देखिए एंड टेस्ट योरसेल्फ कि क्या हम इतने फिट हैं कि हम ये चीजें विद इन द टाइम लिमिट कर पा रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट विच इज कॉल्ड स्टॉक स्टैंड टेस्ट. So see here, what we have to do, we have to place our hands on our hips. We have to keep our one leg onto the other, and then the leg which is on the floor, the feet which is on the floor, we have to raise that feet as well. And in that position or posture, हमें 30 seconds निकालने हैं. Now it's a test to you. आप लोग ये करेंगे, and you will be coming to the institute and telling me कि who all were able to do this for complete 30 seconds. And I don't think more than 5-6 seconds से ज़्यादा आप ये balance बना पाएंगे. So please do try this. Second test is, I'll just show you this one. Try this as well. It's a sit rise test. Okay. So now let's come to the part which we want to talk about today. What is stress? तो हम आज इस presentation में firstly we will be discussing कि stress होता क्या है, what impact it creates on our body, on our system, and then what are the means by which we can work upon reducing it and making our life more meaningful, peaceful, and happier. So, why stress is your body's and mind's natural reaction to pressure. आपके इतने engaging times में when you are so much uh, bounded with things like school, exams, tests, Olympiads, then other things, maybe you are in sports. तो ये सब चीजें when they club together, they somehow, some way tend to create some kind of negative feelings inside you. तो वो चीज धीरे धीरे हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है. And our body acts as an alarm to this by creating certain signals. आपको कभी headache होने लगता है, you start feeling, totally drained out, आपका मन नहीं लगता है, you start having negative feelings. तो ये सब चीजें हमारी स्ट्रेस से इंड्यूस होती हैं. अभी एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट जो स्ट्रेस को ऐड करता है वो आ गया है आजकल के टाइम में, यूज ऑफ गैजेट्स. आपने ये देखा होगा कि योर सबमिशन टू दीज गैजेट्स हैव increased many folds. There are many students who are spending around 3 to 4 hours of a time in a day on the gadgets. अब time to see, we all of us have that limited 24 hours in a day. If we are not utilizing it in the way we should, तो वो सब चीजें हमें स्ट्रेस का रीजन बन जाती हैं. Then there is also lack of physical activity. It is said that physical activity helps us a lot in busting the stress. But अगर आप अपने आप से पूछेंगे या अपने अराउंड देखेंगे, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो दिन में कुछ भी किसी भी तरह का फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक हार्डली देयर विल बी एनी. सो ये जो स्ट्रेस है, नाउ दे आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रेसेस बैड होते हैं. वन वी हैव अ यूस्ट्रेस, देन वी हैव अ डिस्ट्रेस. अब जो यूस्ट्रेस है, दिस इज अ गुड स्ट्रेस. इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में होना चाहिए. इट इज लाइक, आप इस तरह इमेजिन करिए कि आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, एंड बिफोर अपियरिंग इन दैट एग्जाम, आप जब उस हॉल में एंटर करते हैं, सो एक थोड़ा सा एंजाइटी, एक नर्वसनेस आपके अंदर होता है. दैट इज ह्यूज स्ट्रेस, प्रोवाइडेड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट टेस्ट. एंड आप देखेंगे कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, यू स्टार्ट टू अटेम्प्टिंग द टेस्ट, आपका वो स्ट्रेस बिल्कुल चला जाता है एंड आपका पूरा फोकस उस टेस्ट को सॉल्व करने में लग जाता है. सो दैट स्ट्रेस इज गुड. इट हेल्प्स अस टू गिव अस, टू मेक अस सेट हाई गोल्स. ये होना चाहिए.
लेकिन व्हाट इज डिस्ट्रेस? उसी टेस्ट में जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं, आपने लास्ट मिनट तक प्रोक्रास्टिनेट किया, आपने उस टेस्ट के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया, एंड आप फाइनली उस टेस्ट में, आपको टेस्ट तो जा है ही है, जाना ही पड़ेगा, एंड आप उस टेस्ट में अपीयर हुए, तो वो आपके लिए एक बैड स्ट्रेस है, वो बहुत टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें यूथ स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। एंड हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज में, आजकल हमारी आदत हो गई है, बच्चे छोटी छोटी चीजों पे कहने लग गए हैं कि यार मुझे तो बहुत स्ट्रेस है, प्लीज मुझे मत बोलो, मुझे बहुत स्ट्रेस है। दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस पॉइंट कि थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में होना जरूरी है, लेकिन वो कब थोड़ा रहे और वो कब बड़ा बन जाए, उसके बीच की जो एक थिन लाइन है, उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है कि वो डिस्ट्रेस ना बने, उसी के बेसिस, उसी के ऊपर ये आज की प्रेजेंटेशन है। Now, these are very small examples. So there was one student, Sarah, who was losing sleep and struggling to, focus on the studies. It happens with many of us. So what she did was she introduced a very simple 10-minute routine of meditation and breathing exercises. And उसको ये रियलाइजेशन भी नहीं थी। मैं आजकल के बच्चों को बोलूं कि यार मेडिटेट करो, तो दे फील वेरी फनी अबाउट इट कि यार क्या ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहोगे। You do not know the benefit of any such measures until you practice it. And it is not कि आप एक ही दिन में you will start seeing the results. आपको it's gonna take some time, but after that you will see कि हाँ इन चीजों से फर्क पड़ता है। So she was able to concentrate more, soothe her mind and perform better in her test. Similarly, if we talk about an adult, a person, Mohan, uh, he was so much occupied with so many things around him, his work life, his family life, and he was not able to maintain that balance. So what he did was to clutter, जो इतना thoughts का clutter होता है, उसको वो sort करने के लिए, he just started having walks, daily walks. He introduced that part into his life, and then he felt कि इतना ही time अपने आप को देने से he could settle down his thoughts, he could plan his day, and he could do all the things in a better way and managed his time with family and with the work in a much better way. So there, yes, guys, there are techniques, there are ways by which हम अपनी छोटी छोटी way of lives को better कर सकते हैं. Now, see, there, when the stress starts building up, what are the signs जो कि आपको ध्यान देने हैं कि ये हो रहा है, इसका मतलब कि I'm not going in the right direction. I need some help. So very first basic few indicators are physical indicators. You start having headaches. You start having any body pains. और ये तो आपने बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपने कोई टेस्ट देना चाहना है या देर इज समथिंग बिग कमिंग अप इन योर लाइफ, so you start feeling something in your stomach. Maybe it gets upset or there is some kind of pain in your stomach. So ये सब indicators हैं कि आपको आपके अंदर stress build up हो रहा है. Then there are many students who come to us and say कि हमें concentrate करने में difficulty आती है. We वी हैव सो मेनी थॉट्स, हम एक्स करें, वाई बुक करें, जेड बुक करें, हम इस तरह पढ़ें, हम उस तरह पढ़ें, हमारे सिर्फ माइंड में चीजें हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है वो हमें नहीं पता है. सो दीज आर प्रॉब्लम्स विच स्ट्रेस ब्रिंग्स टू योर माइंड, मेंटल प्रॉब्लम्स. एंड yes, ये पेरेंट्स बेटर बता पाएंगे कि देर आर लॉट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन अ चाइल्ड व्हेन द स्ट्रेस बिल्ड्स अप. आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन आपके पेरेंट्स पे, आपके क्लोज वंस पे ही निकलती है. You tend to avoid meals or you tend to behave normally. आप अपना एंगर, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हो. And procrastination, yes, हम we stop doing things at the right time. We wait for it कि जब बिल्कुल हमारे सिर पे कोई डंडा पड़ेगा, कोई टेस्ट होगा, या बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास, then we start working upon that thing. So, guys, these are some indicators. If you are going through any of these, then that means there is stress building up in your life, and we need to actually take some action to resolve it. So, these are some of the things that the stress creates inside our body. There is adrenaline surge, then there is some hormone this which is called cortisol, जो कि release होता है, जो कि आपकी body को during stress, fight और flight mode में ले आता है.
अब इन सब चीजों से देखो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। इट इम्पैक्ट वन आवर इम्यून सिस्टम, एंड सेकेंड आवर माइंड। हमारी अलर्टनेस, हमारी हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, वो हमारी कम होती रहती है अगर हम कंटिन्यूस स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए आपने ये चीज में भी ऑब्जर्व की हो कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया किसी एग्जाम के लिए, बहुत मेहनत की, दिन रात उस पे आप लगे रहे, लेकिन स्टिल ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको इतना ज्यादा एंजाइटी था, इतना प्रेशर था कि यू कुड नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आपको घर आए, आपने वो टेस्ट दोबारा सॉल्व किया, एंड यू कुड फील कि हाँ आपसे हो गया वो सॉल्व, लेकिन ड्यूरिंग दैट टेस्ट आप वो नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा हमने बिल्ड कर लिया था, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम, हमारा माइंड की अलर्टनेस जो कि हमें किसी भी एग्जाम में रिक्वायर्ड होती है, वो इतनी वीक हो गई, हम वी कुड नॉट परफॉर्म एट दैट टाइम। And yes, it creates a deep impact on your digestive system. I will be coming to this later कि कैसे हमारा digestive system, our gut is connected to our brain. Everything is connected. So it is like zero or one thing. या तो आप हर तरह से you are in a happy zone wherein सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, या फिर आप हर तरह से you're not performing, even your body is not help supporting you in any way, and it's leading to some kind of anxiety depression also. तो इधर आप बहुत खुश हो, या आप बिल्कुल आपके साथ सब कुछ खराब खराब गलत हो रहा है। ओके। सो अब, हाँ, ये आपने समझा पहले कि व्हाट इज स्ट्रेस, राइट? ठीक है। अभी हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे कि ये स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन कम आउट ऑफ इट। तो अब उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। वन इज फिजिकली हम क्या कर सकते हैं, एंड वन इज मेंटली हम क्या कर सकते हैं। So in this physical fitness thing, uh, if some of you are into some games, बहुत अच्छी बात है, very nice। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, this is the first thing guys you need to add into your schedule, that you need to do 30 minutes of any kind of physical fitness activity. It can be walking, dancing, yoga, some game, some sport। आप चाहे अपनी गली में जाके कुछ भी खेलिए, but some kind of physical fitness is really very important। आई से दिस टू स्टूडेंट्स कि आपको लगता है कि आईआईटी के एग्जाम में देयर आर थ्री सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम, बट आई से दिस नहीं यार, देयर आर नॉट थ्री सब्जेक्ट, देयर आर फोर सब्जेक्ट्स, इट इज पीसीएम एंड फिजिकल फिटनेस। इतना इम्पोर्टेंस है इसका, जितना की रोल किसी अदर सब्जेक्ट का है, उतना ही इस उससे रादर ज्यादा इसका रोल है। क्योंकि हमें ड्यूरिंग दैट डे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 2 3 4 साल की जर्नी टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए हमें हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा साथ चाहिए। सेकेंडली, ड्यूरिंग दैट डे, ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, हमें अपने माइंड की अलर्टनेस चाहिए। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस से ही बिल्ड हो सकती हैं। सो मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पॉइंट दैट यू नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी each day for 30 minutes. Then you need to prioritize your sleep. Somehow we at times we get this impression कि हाँ अभी sleep is not that important। अगर हम पढ़ाई पे फोकस्ड हैं, हम 4 5 घंटे भी सो लेंगे, तो इट इज ओके विद अस, हम वी कैन मैनेज थिंग्स। बट उसका आपको सडन इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। मे बी 1 मंथ आप ऐसे निकाल लेंगे, 2 मंथ्स भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्लीप से आपकी बॉडी, दैट्स द टाइम व्हेन द बॉडी इज हीलिंग। सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours अ डे, आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को लॉन्ग टर्म किसी भी फाइट या किसी भी जर्नी के लिए उसे कम प्रिपेयर कर रहे हो। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। एंड ये तो मैंने आपको बोला कि स्टडी के कारण बच्चे अपनी स्लीप को सफर करते हैं, बट मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स का रीजन कम सोने का स्टडीज नहीं है, इट इज गेटिंग इंडल्ज्ड इन सम डिजिटल डिवाइस। वी आर इन दिस हैबिट कि हम सोने से पहले वी ओपन अप लैपटॉप्स और मोबाइल्स और टैबलेट्स, एंड वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन दोज थिंग्स, दे आर सो एडिक्टिव। आप 1 घंटा सोचते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज। तो उससे क्या है कि आपका कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज स्लीप, राइट? एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर फिजिकल फिटनेस कि वी नीड टू हैव वेरी गुड डाइट, very nutritious diet to fuel our body.
अगेन हम इसको भी इतना ज्यादा फोकस में नहीं रखते हैं, हमें लगता है कि चल रहा है काम, एंड रादर हम अपने आप को ड्यूरिंग दिस हम क्या करते हैं, वी आर इन स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वी इंडल्ज इन जंक फूड, क्योंकि हमें लगता है कि कोई ना कोई वे से तो हमें हमारे माइंड को या हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, इसलिए वी थिंक ऑफ कि हाँ यार आज बहुत देर पढ़ ली है या आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सो लेट्स हैव अ पिज्जा पार्टी और लेट्स हैव अ कोल्ड ड्रिंक। इससे आप क्या कर रहे हैं? डू यू थिंक यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस? बट आई वुड से यू आर enhancing it, you are adding to it, because having a right proper nutrition is equally important to bust your stress. इसके लिए I would like to tell you, many times we say this that I have a very strong gut feeling कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, we have this feeling। तो गट, अब गट आपको भी पता है इट रिजाइड्स वेयर, तो हमारा ब्रेन है जो हम कहते हैं सारी थिंकिंग करते हैं। तो व्हाई डू वी गेट दिस फीलिंग कि यार गट फीलिंग है हमें कि ये करना चाहिए? इट्स बिकॉज our gut and our brain is connected by a nerve which is called vagus nerve, and that's the reason our gut is called our second brain, क्योंकि ये दोनों इतने कनेक्टेड हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ गट हेल्थ पे डिपेंड करती है, और वाइस वर्सा। हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जो हमें व्हेन वी फील वेरी गुड वी आर सो एक्साइटेड, वो हमारे दे आर द रिसेप्टर्स आर इन गट। तो अनहेल्दी गट विल डायरेक्टली लीड टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। Happy gut is a happy mood. So, guys, these are four things which I would like you to introduce into your diet to have a very good gut health, which will indirectly lead to a good mental health. First is probiotics. Please have good amount of curd, buttermilk, fermented foods. They are really really good to have in your diet. देन प्रीबायोटिक्स, अब देखिए प्रोबायोटिक्स आर सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, राइट? अब उन बैक्टीरिया, वो हेल्दी बैक्टीरिया है, उन हेल्दी बैक्टीरिया को हमें फ्यूल करने के लिए या उनके खाने के लिए भी हमें कुछ उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर कम्स प्रीबायोटिक्स व्हिच आर होल ग्रेन्स, मिलेट्स, सैलेड्स। ये आपके डेली डाइट का एक पार्ट होने चाहिए। देन वी ओवरलुक दिस थिंग एज वेल कि सबको पता है, आई थिंक एवरीबडी सिटिंग हियर नोज कि हाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड 2 to 3 liters वाटर अ डे, बट वी डू नॉट डू इट। सो मेक इट अ पॉइंट कि आपको टेक सम बिग बॉटल, आजकल बहुत फैंसी अच्छी बॉटल्स आती हैं विच आर लाइक 2 3 liters का कैपेसिटी, बाय इट। मेक इट अ पॉइंट कि ड्यूरिंग थ्रू आउट द डे यू नीड टू फिनिश दैट बॉटल। एंड लास्टली, healthy oils. It's really important that you, ये rather for more than the children, this is for the mothers, if they are listening. uh, Healthy oils may please make the entire food at home using oils like desi ghee, mustard oil, or any cold pressed oil, maybe coconut oil, groundnut oil. The refined oil is like so bad for your health and your child's health कि ये हमारे गट को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। So if we switch to these healthy options, you will feel कि आपका gut is really happy, which leads to a happy mood. So, guys, this was about physical fitness. Now we are coming to the mental fitness. Of mental fitness, these are few things which one should incorporate into one's schedule. One is be mindful, meditate. I'll be coming to this in detail. Break your tasks. अभी हमें ये अभी राइट नाउ आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे तो आईआईटी नीट या लेट्स से कॉमर्स का एसआरसीसी कॉलेज कन्वर्ट करना है, सो मैं वो ही माइंड में रख के चलूं कि बस मुझे तो ये करना है, ये करना है, इतना बड़ा टास्क है, कैसे होगा आई डोंट नो, ये नहीं करना है। यू नीड टू ब्रेक इट डाउन कि अगर कल को आईआईटी सॉल्व करना है तो आज की डेट में मुझे क्या करना चाहिए। देयर शुड बी स्मॉल गोल्स इन योर लाइफ कि मे बी अपकमिंग टेस्ट में, अपकमिंग iQuest के टेस्ट में आई नीड टू परफॉर्म गुड, आई नीड टू कम इन टॉप 5 ranks. And this is a proven fact. Students who are with us and who are getting top 5 ranks consistently in class 9th and 10th automatically go to either IITs or government medical colleges or good colleges of commerce. So rather than making it a big mountain, break it down into small, small things. Then you need to talk positively to yourself. It is said that language of life is I can, and language of misery is I can't.
सो ऑलवेज थिंक दिस वे कि मैं कर सकता हूँ यार, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट. And lastly, please connect with your family members, with your teachers, with your mentors. Please feel that these people around you are your real well wishers. They will talk you through any kind of situation, any kind of problem. Have faith in them. Don't have any kind of fear with them from them. ये सोचो कि कोई भी मेरा प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी चीज मुझे मेरे अ, लक्ष्य से, मेरे मेरे एम से मेरे को दूर कर रही है, it's creating kind of a hindrance to my path. So please talk about that thing to any of your either family members or your mentors, right? So coming to mental fitness, this is, guys, please see this. This is the way our mind works, our mind mapping, and it is taken from a very famous book, The Code of Extraordinary Mind. Now, see, it has our mind, our system has four levels in which we operate. The level one, the very first level is living in the culture scape. The second is the awakening. Third is recoding yourself. And fourth is becoming extraordinary. Now, what is level one? Level one में जब हम most of us live in this level wherein we feel कि हमारे साथ चीजें हो रही हैं, हमारे साथ, हम पे लाइफ इज हैपनिंग टू अस. लाइफ जैसे जैसे हमसे करवाई जा रही है, हम वैसे वैसे चलते जा रहे हैं. तो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस वी आर लिविंग लाइफ एज लाइफ इज कमिंग टू अस. So this is level one where most of the people operate. Now, gradually, once you start practicing things like meditation or there are things in level two which are called creative visualization and vision boards. इससे क्या होता है कि वंस वी स्टार्ट मेकिंग अप आवर माइंड की एक विजन बोर्ड है हमारा. यू मस्ट हैव हर्ड दिस कॉन्सेप्ट कि आजकल लोग फैंसी विजन बोर्ड्स बनाते हैं. दे राइट व्हाट दे वांट टू बिकम इन कमिंग 2 years, 5 years, 10 years, एंड देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंग्स लाइक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वेयर इन दे थिंक कि हमने वो गोल अचीव कर लिया है. तो इससे they are converting themselves from level one to level two, wherein there is a realization कि हम भी life को control कर सकते हैं. There is something, there are some movements or some specific things जो कि हम अपनी life में अपने लिए खुद से कर सकते हैं. Life is not happening to us. We can make the life happen, right? From there, we move to level three, which is recoding yourself, wherein a major part is intuition, wherein you get to know from inside. आपके अंदर से आवाज आती है. आपके हर किसी के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में सबको पता होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट? तो जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगते हो एंड यू ट्राई टू स्टार्ट टू एक्ट ऑन इट, तो आपको बहुत एवेन्यूज खुलते हैं. आप ऐसी चीजें सोच पाते हो जो आपकी कैपेबिलिटी, आपके पोटेंशियल से भी आपने कभी बियॉन्ड होती हैं. यू नेवर थॉट कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ. एंड देन फाइनली यू रीच दैट स्टेज ऑफ बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, wherein you feel that mind can influence reality. You can change the world, you can change the things around you, you can become anything you want. There is no limit to what you can achieve in life. So now, how to move from one level to another level in this mind map? There are certain ways. So I am going to tell you, going to give you a brief of those ways. And if any one of you feels like कि यार मुझे ये चीजें click कर रही हैं, so please meet us at the institute so that we can go in deep for all of any of these practices. So very first practice is consciousness engineering. हम सबके पास या हमारे पेरेंट्स के पास फोन्स होते हैं, आईफोन, सैमसंग एंड जो भी है. अभी आपने ये देखा है, फोन चाहे आपके पेरेंट का है, लेकिन आपको ये चीज पता रहती है कि कौन सा उसमें अपडेट आ गया है, एंड यू आर द फर्स्ट वन टेलिंग योर पेरेंट्स कि यार ये अपडेट है, ये करो, जल्दी से करो. किसी का फोन, आई डोंट थिंक कि किसी के पास आईफोन है तो वो भी iOS 5 6 पे होगा. Everyone, each one of you must have upgraded your phone by now, right? हमें अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को अपग्रेड करने के बारे में तो सब पता है, लेकिन आर वी रेडी टू अपग्रेड आवरसेल्व्स? तो हमारी बॉडी में भी वी कैन डिवाइड इट इनटू टू थिंग्स. One is upgrading your brain hardware and upgrading your brain software. Now, what is brain hardware? Hardware is hardware is the beliefs which we have right from the beginning. हमारे अंदर कुछ beliefs भर दिए गए हैं, या हमने seeing our society, seeing our
फ्रेंड्स, पीपल अराउंड अस, हमने कुछ बिलीव्स अपने अंदर डाल लिए हैं। उनमें कुछ पॉजिटिव बिलीव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव बिलीव्स भी होंगे। सो अपग्रेडिंग योर ब्रेन सॉफ्टवेयर मीन्स कि आप उन नेगेटिव बिलीव्स को डिस्कार्ड करके ट्राई टू रिप्लेस इट विथ समथिंग वेरी एम्पावरिंग बिलीव, राइट? एंड अपग्रेडिंग ब्रेन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दे से कि यार इतना इतना ज्यादा काम होता है मैम। मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता हमसे। अब टाइम मैनेजमेंट तो यार इट्स लाइक एक ही काम रिटन वर्क करने के लिए आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट रिटन वर्क ऑफ स्कूल ऑफ एनी सब्जेक्ट इन 3 hours in a day and in 30 minutes in a day। सिंगल काम करने के लिए आप 3 घंटे भी लगा रहे हो, आप 30 मिनट भी लगा रहे हो। सो अपग्रेडिंग दिस ब्रेन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो हमारी पूरे दिन की एक्टिविटीज हैं, हम उन सब को, हर प्रैक्टिस, 99% ऑफ द प्रैक्टिसेस कैन बी अपग्रेडेड, मतलब कैन बी डन इन अ बेटर वे। आप वही एक्सरसाइजेस, आप देखो, आप वही प्रैक्टिसेस ईयर बाय ईयर उसी टाइम फ्रेम में किए जा रहे हो। हैव यू एवर गिवन दिस अ थॉट कि यार वो प्रैक्टिसेस को हम बेटर भी बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से आप 8 घंटे, देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम टू मी एंड सेड कि मैं तो, मुझे तो 10-12 घंटे की स्लीप चाहिए, 10 घंटे की स्लीप चाहिए है। अब यार ऑफ कोर्स, इतने अगर आपको कुछ अकम्प्लिश करना है तो 10 hours स्लीप इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द बेटर वे इज कि आप अपने इस प्रोसेस को, यू कैन, rest is required, sleep is required, but you can take all the benefits of the sleep by accessing deeper states of sleep in those limited 6 to 8 hours than sleeping for 10 hours। तो हमने उस वर्क को बेटर बना दिया। सिंपल वर्क है, ब्रशिंग योर टीथ और मे बी टेकिंग अ बाथ। आप इसको, हर प्रोसेस को बेटर बना सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, जिससे कि यू विल बी वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल, राइट? Next is segment intending. Now, this is something which I want each one of you to start practicing right from today. इसमें आपको क्या करना है? In the morning, once you are getting ready, you don't have to take out any extra time for that. Once you're getting ready, you need to start giving command to yourself as to how you want your day to go. बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपने माइंड में पूरी एक पिक्चर बनाएंगे कि मेरा डे आज ऐसा जाएगा। मे यू कैन स्टार्ट लाइक दिस कि आई एम गोइंग टू हैव एन ऑसम डे एट स्कूल वेयर एन आई विल बी लर्निंग एनीथिंग एवरीथिंग, आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द things or all the question answers which a teacher expects me to, and I'll be having great time with my friends. Then after coming back, I'll be having wonderful lunch. I'll be going to Institute iQuest and I'll be learning so much there. After coming back, I'll have a healthy conversation with my family. I'll have good time. I'll have a very good physical workout, and I'll be going very nicely to my bed to have rest. So whatever it is, it's just an example, but whatever it is, you paint a picture in your mind कि यार this is how I want my day to go, and please, and you will see guys, start practicing this and within a month you will see so much tremendous change in your outlook towards things। जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो चीजें आपको स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप हट जाएंगी। अब वो हट कैसे रही हैं? सिर्फ वो इसलिए हट रही हैं क्योंकि हम अपने माइंड को बता रहे हैं कि तुमने कहाँ फोकस करना है। You are, see, read this line: the most valuable skill that you could develop is to direct your thoughts towards what you want the most and then give your undivided attention to that। आपकी attention अपने आप positives पे जाएगी, negative पे नहीं जाएगी, अगर आपने अपना डे अपने माइंड में इस तरह प्लान किया हुआ है। ओके, now many of us are not able to accept the setbacks in life। हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो, हम फेलियर हो जाए, हमें कोई चीज पसंद ना आए, समथिंग इज कॉजिंग पेन टू अस, हम वहीं पे हमारा पूरा मोरल सब कुछ डाउन हो जाता है। बट हम ये नहीं सोचते कि अगर आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन का ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि हर किसी की स्टेज में पेन इज एक्चुअली दैट पॉइंट जहां से उन्होंने ट्रिमेंडियस ग्रो करना स्टार्ट किया। it is a prerequisite for growth, and it's a very good teacher।
सी इट इज नॉट अबाउट मेकिंग योर जर्नी कंफर्टेबल, कि हमें पहुंचना तो बहुत बड़ा है, हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन कंफर्ट जोन में रहते हुए। इज इट पॉसिबल कि आप अपने बेड में बैठते हुए मजे से मे बी नेटफ्लिक्स देखते हुए, कॉफी पीते हुए, कैन यू रीच योर गोल्स? तो थोड़ा सा तो हमें एडवर्सिटी लाइफ में लानी पड़ेगी। सो लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन यस वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस पेन। दिस कैन एक्ट एज अ propellant, a fuel। ये हमें एडवर्सिटीज को पास करने के लिए, फेस करने के लिए, इट विल गिव अस स्ट्रेंथ एंड देन सी हाउ लाइफ विल अनफोल्ड फॉर यू। सो डू नॉट कंसिडर एनी सेटबैक इन लाइफ एज कि अब तो सब गया। कंसिडर इट एज समथिंग कि अब आप इससे और आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज एन एनर्जी। पेन से कैसे निकलना है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनर्जी रिडायरेक्शन टेक्निक। See, I'll just share an example with you. There was one person who worked day and night because he has this aim, he has this vision that I want to buy a very shiny, very nice, very fancy car, uh, a Beamer. So he worked day and night, worked really hard, and he was able to achieve that goal. He bought a car, and one day, uh, like it happens, it's very normal. His car, he had parked it somewhere, and some other person वो आया और उसकी कार पे डेंट मार के चला गया। He was so shattered, so shocked, he could not accept that। उसके लिए एक ही ड्रीम था उसकी लाइफ का, और उसका वो उसके सामने शैटर हो रहा था। So but then what he did, he thought कि मुझे इसको रिपेयर कराने के लिए अराउंड $800 का कॉस्ट है। I have to somehow recover that cost by other means. So what he did, he turned his pain, his problem into a project. He said कि मुझे वो मनी किसी तरह निकालनी है। सो वट एवर ही यूज टू वर्क, उसने वहां से, वो तो जो वर्क कर रहा था, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग 1 hour एक्स्ट्रा ऑन समथिंग जिससे कि उसको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। एंड आई थिंक विद इन अ मंथ और टू he was able to generate that income, and he got his car repaired. But not only he got his car repaired, he got an additional $800 का source of income which he introduced into his life. तो अगर हम इसको लेटर इंट्रोस्पेक्ट करें, सो क्या वो कार डेंट का जो उसके साथ एक प्रॉब्लम हुई, जो उसके ड्रीम शाटर हुए, कैन आई से दैट थिंग टर्न्ड एज अ ब्लेसिंग टू हिम बिकॉज इट एडेड टू हिज वेल्थ? सो दिस इज हाउ गाइज वी नीड टू वर्क ऑन आवर प्रॉब्लम्स, वी नीड टू टर्न देम इनटू सम गुड प्रोजेक्ट्स, कि इससे ये निकालते हैं, इससे इसको इस तरह बेटर करते हैं, राइट? देन देयर इज अ हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ये मोस्ट ऑफ अस डू दिस। हम हमारा ना हैप्पीनेस का एक इफ देन मॉडल है। आपने भी ये देखा होगा, अगर मैं आईआईटी क्लियर करूं तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा, अगर मैं ये चीज अचीव कर लूं, अगर मुझे ये लैपटॉप मिल जाए तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा, अगर मुझे मेरे साथ ये हो जाए तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा। ये इफ देन मॉडल ऑफ हैप्पीनेस इज अ फ्लॉड सिस्टम। हमें हमारी हैप्पीनेस को किसी चीज के साथ, किसी सक्सेस के साथ, किसी मनी के साथ, किसी गोल के साथ एसोसिएट नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा ओवरऑल लाइफ में एंथू, अगर हमें बाई चांस वो ना मिले तो बहुत, इट टर्न्स टू नेग्लिजिबल। So it is actually said there is no way to happiness. Happiness is the way. इसके लिए I'll show you this. See this map. It's again from the Code of Extraordinary Mind. On the x-axis, we have plotted vision for the future. And on the y-axis, we have plotted happiness in the now. Happiness in the now का मतलब है, आप right now जो चीज कर रहे हैं, are you happy in that? हर हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे वो कहीं पार्टिसिपेशन है, हमें मोमेंट में हैप्पी रहना सीखना है। हमें अपनी हैप्पीनेस को किसी चीज के साथ अटैच नहीं करना है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, आपकी कोई विजन है फ्यूचर की, राइट? लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखिए, यू डू नॉट हैव एनी विजन एंड यू आर नॉट हैप्पी। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेट टू बी इन। इसमें सिर्फ आप ऐसे उसमें फंसे हुए हो कि आप लाइफ लीड कर रहे हो, लेकिन विदाउट एनी एम, विदाउट एनी हैप्पीनेस, एंड देयर इज नो स्पार्क इन योर लाइफ। एंड ह्यूमंस आर मेंट फॉर ग्रोथ।
तो इस स्टेट में रहना बहुत डेंजरस स्टेट है। अब लेट्स से बिकॉज ऑफ societal pressure, your family pressure, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मेंटर्स, हर हर सेशन में हम अपने आप को बताते हैं देयर शुड बी अ एम, देयर शुड बी अ गोल इन योर लाइफ। तो आपने एक विजन बना ली अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन आप हैप्पी नहीं हो। आप बस विजन बना ली है, एंड दैट लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी कि हाँ, कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन वो करते हुए जो जर्नी है उसमें हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स स्ट्रेस। अब ऊपर आइए, द करंट रियलिटी ट्रैप। मान लीजिए आप कहें कि मुझे विजन बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी टेम्परेरी हैप्पीनेस से ही खुश हूं, मैं वेकेशन पे चला जाऊंगा, आई विल एंजॉय देयर, आई विल हैव एन ऑसम टाइम देयर। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इट इज अ वेरी टेम्परेरी थिंग। वेकेशन पे क्या आप सालों साल रह लोगे? एंड लेट्स से आप वेकेशन पे तो 2 3 4 दिन के लिए जाते हो, लेट्स से यू गो फॉर, आप उसी जगह पे 15 दिन लगा के दिखा दो, यू विल गेट सो बोर्ड एंड सो फ्रस्ट्रेटेड। आप किसी वर्ल्ड के बेस्ट होटल में 15 डेज भी रह लोगे तो आप नहीं रह पाओगे, बिकॉज दैट इज अ टेम्परेरी हैप्पीनेस विच अकर्स ओनली फॉर अ डे और टू। सो बेस्ट पार्ट इज कि आपका विजन होना चाहिए फ्यूचर का, एंड देयर शुड बी हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट when you are moving on that journey to achieve that vision. सो आपको किसी तरह अपनी प्रेजेंट स्टेट को हैप्पी बनाना है। ओके, नाउ अब ये जो विजन बनाते हैं हम, ये पुरानी बातें हो गई। आपने ना एक वो पढ़ा होगा, स्मार्ट गोल्स, जिसमें आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक गोल्स। दीज आर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स नाउ। अभी क्या है, द न्यू कॉन्सेप्ट्स, द या जो एक्चुअली लोगों ने फील किया है, प्रैक्टिस किया है, वो ये है, आपके गोल्स रियलिस्टिक होना जरूरी नहीं है। क्योंकि आपके गोल्स सिर्फ आप पूरे नहीं कर रहे हो, आपके गोल्स पूरा यूनिवर्स आपके साथ लग के पूरा करेगा। इसलिए मेक बिगर बोल्डर गोल्स। आप माइंड में ये सोचिए कि मुझे, अगर आपको लगता है कि मुझे बस ये बनना है, तो यहां मत लिमिट रहिए, आप अपने गोल्स को 10 टाइम्स हायर पे लेके जाइए। कैसे होगा, क्यों होगा, किसके थ्रू होगा, ये कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड ये माइंड में रखिए, 50% ऑफ योर गोल्स शुड हैव 50% चांस ऑफ फेलियर। अगर आपने गोल ही ऐसा बना लिया जो 100% अचीवेबल है, तो वो गोल में कोई आपने उस दैट मीन्स आपने उस गोल में अपने आप को, अपने पोटेंशियल को लिमिट करके वो गोल बनाया है। आप अपने पोटेंशियल को खुद ही कम कर रहे हो। आप ऐसा गोल बनाओ और फिर देखो कि आपका पोटेंशियल आपको वहां तक पहुंचाता है या नहीं। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ नॉट अचीविंग 100% ऑफ योर गोल्स। किसी के गोल्स अचीव नहीं होते हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज गूगल। अगर आप गूगल के आप देखेंगे, गूगल इज अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी, बट अगर आप उसके प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि फेल हुए, जो कि नहीं चल पाए मार्केट में, दे आर सो मच। ऐसा नहीं है कि गूगल इज अ 100% अचीवर। तो make your goals way beyond than what you think you can achieve. And goals should be such जो कि आपको scare करें, आपको excite करें. So while making those goals, you should be asking these three important questions. What experiences do I want to have in life? What person I need to be when I want to grow up? मेरे क्या ethics, क्या क्या मेरे एज अ पर्सन, मेरे अंदर क्या ट्रेट्स होने चाहिए? And lastly, and which is very important, is by my goal, how I am able to contribute to my family, maybe friends, maybe the world. Once you start thinking this way, आप देखिए आपकी growth can become endless. So guys, this is a very small example. You might have heard about Sir Edmund Hillary. He was the first one to scale Mount Everest. So what happened was, he attempted to climb that Mount Everest, and considering he was the first person, उसको तो ये भी नहीं पता था कि whether it is possible or not, achievable or not. But he failed thrice. 3 बार the person failed in attempting to reach the top. But then once, when he got failed, he was sitting in his tent, and there was a painting of Mount Everest ka top. He looked at that painting and he said to that painting, "See, Mount Everest, the more and more you reject me, the more and more I am becoming determined to stand at top of you." Why? You know why? Because you, even being a Mount Everest, you cannot grow any further.
You have achieved your growth. You are there. But I, as a human being, have no limitation to my growth. मैं जितना चाहूं उतना ग्रो कर सकता हूँ. So see, this is such a beautiful example. If you start thinking this way, your each and every problem will become so small. So guys, this is one more thing which uh, studies showed. There was a study done, and a group of people were taken, and they were asked to practice this habit of gratitude every single day for 5 to 10 minutes. And after 25 days, a test was conducted, and it came out that all that group was 25% more happier than what they were before. So showing this feeling of gratitude, or having practicing this for 2 minutes a day, when you are feeling gratitude for all the people who are somehow playing a major role in your life. By doing this, you become a compulsive good finder. आपको लोगों में, people में, society में, चीजों में, incidents में, you start seeing good things rather than bad things. So let all your miseries in life be as short-lived as your New Year resolutions. Miseries को हटा दो life से. And also, your motivation should come from inside. If it is coming from outside, you're just a follower. But if you want to become a leader, that motivation has to come from inside. So this is some transition growth. You are here at a lesser comfort, at a starting point, and you want to achieve something new, a great level. So उसके लिए आपको जाना एक uncomfortable transition से पड़ेगा. अब वो uncomfortable transition क्या है, आपको खुद से पूछना पड़ेगा. What is one pleasure I can stay away from? I think most of you must be having the answer as digital devices. करके देखो. 21 days एक ये करके देखो कि ये एक ऐसा प्लेजर है, अगर मैं अपनी लाइफ से हटा दूं तो क्या मेरे लिए ग्रोथ बेटर होगी? डेफिनेटली होगी. बट ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन अपने अंदर लाते हैं, इट लीड्स टू एक्सेलरेटेड ग्रोथ. एंड व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन ग्रोथ इन लाइफ, your life will be there to watch for others, right? So think one thing associated with pain. मान लो कोई एक चीज डिफिकल्ट है, पेनफुल है, लेट्स से डूइंग सम हार्श फिजिकल एक्टिविटी, बट माइंड से सोचो कि इज इट द राइट थिंग टू डू, शुड आई बी डूइंग इट, देन गो फॉर इट. डू नॉट थिंक कि यार ये मेरे लिए मुश्किल है, हाउ आई विल बी एबल टू डू इट. जस्ट गो फॉर इट. लेजेंड्स कीप देयर लाइफ इन ट्रांजिशन. जो बड़े लोग हैं, जो आप एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये सब आप देखते हो, ये अपनी लाइफ में ट्रांजिशन, दे डोंट सिट, they keep on hustling, they keep on doing something, चाहे वो uncomfortable situation है. But I'm telling you the other way around. आप लाइफ में ट्रांजिशंस लाते रहो, बैठो मत, एंड आप लेजेंड बन जाओगे. So start doing that. फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस इज यार वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एज में मैक्सिमम बच्चे ईगो के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. ईगो बेसिकली क्या है यार? द मोस्ट टायरिंग एक्सपीरियंस इज ना, हम अपने अपने आप को प्रूव ही करते रह जाते हैं अदर्स को. वो जो एक सुपीरियर प्रूव करने का हमारा एक ऑब्सेशन है, जिससे हमारी ईगो हमारे एक्ट्स पे हावी हो जाती है. सो यू टर्न मीन्स going beyond your ego by stopping from proving yourself to others. ईगो वॉर में जीतने दो आप दूसरे को, लेट द अदर पर्सन हैव दैट ईगो विक्ट्री. लेकिन आपके पास एक जो सेटिस्फेक्शन होगी, एक पीस होगा, दैट यू हैव ट्रायम्फ ऑफ लव, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू reduce your stress in a big way. Forgiveness is also one of the things. आपको मैं एक एक्टिविटी दूं, आई गिव यू अ डम्बेल एंड आई आस्क यू टू होल्ड इट. आप 5 मिनट आराम से होल्ड कर लोगे, 10 मिनट हो सकता है आप आराम से होल्ड कर लो. आई आस्क यू टू होल्ड इट फॉर अ डे, फॉर 10 days. आफ्टर 10 days आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व, जो आपके बॉडी में पेन हो जाएगा उस डंबल को होल्ड करने का, उसके लिए यू विल हैव टू टेक सम मेडिकल हेल्प. सो दिस हेट्रेड वी क्रिएट इन आवरसेल्व्स फॉर अदर्स या फॉर आवरसेल्व्स, ये हमारे जो बर्डन है ना, दिस बर्डन इज इवन मोर देन द बर्डन ऑफ अ डम्बेल. इसकी इसकी इसको ठीक करने के लिए हो सकता है 10 दिन डम्बेल उठा के आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देगा, आप ठीक हो जाओगे. लेकिन
ये वाला बर्डन जो मेंटल बर्डन है, इसको ठीक करने में एजेस लग जाती हैं। क्या जा रहा है यार, जस्ट फॉर योर ओन मिस्टेक्स फॉरगिव योरसेल्फ, कि ठीक है यार हो गई गलती, इट इज ओके, लेट्स मूव अहेड, गिल्ट मत रखो, एंड फॉर अदर्स मिस्टेक फॉरगिव कर दो ना। क्या, क्यों अपने माइंड में उसे रखा हुआ है, क्यों आप उसको लेके चली जा रहे हो? जस्ट लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम दैट वेट ऑफ हर्ट, छोड़ दो, जाने दो, एंड यू विल थिंक हाउ लाइट यू आर फीलिंग, हाउ enjoyable each experience becomes. Okay, so this is the way to deal with the problems. ACR rule: accept the unchangeable. जो चेंज नहीं कर सकते हो आप, उसको एक्सेप्टेंस बनाओ उसकी। चेंज द चेंजेबल, जो चीजें आपके हाथ में है उन्हें चेंज करो, एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल। मान लो देर इज सम कंपनी, सम पर्सन जो आपको नहीं एक्सेप्टेबल है, जो आपको कॉन्स्टेंटली लो फील करा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। सो हैप्पीली, इधर हैप्पीली गेट अलोंग और हैप्पीली गेट अवे। चले जाओ वहां से, निकल जाओ, उसको रिमूव कर दो अपनी लाइफ से। एंड by introducing all this, you will see that you can change your negative emotion which comes from non acceptance to a positive emotion which comes from acceptance. Power of acceptance: surrenders yourself. See, our main aim is, हमने बहुत बड़ा गोल बनाया, हम उसके लिए कंसिस्टेंटली बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें एक फेथ चाहिए। अपने आप को गॉड पे, या जो भी पावर को आप बिलीव करते हो उस पे सरेंडर कर दो, कि जैसे मेरे लिए आप जो भी सोचेंगे, वॉट एवर इज गुड फॉर मी, यू नो बेटर देन मी। So think of that car dent example. That person didn't knew at that time कि this thing is going to turn as a blessing for him. So surrender yourself to something bigger and keep on moving your steps, doing something, and let other things, other bigger forces handle what is good for you. So this is just the conclusion of what we have discussed today. Your completeness in life is healthy body, which comes from physical fitness and eating right. Wealthy life will come on its own, right? Meaningful relationships, not having any kind of grudges or any kind of hatred towards anyone. Spiritual rootedness leads to inner peace, and celebrating your life, making each moment full of enthusiasm. अपना हर स्टेप, अपने हर काम में फन लाओ, enthusiasm लाओ, dance your way to washroom, eliminate dullness from your life. Just हर वक्त ऐसी स्टेट में रहो कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आई एम लिविंग ईच मोमेंट ऑफ माई लाइफ. And guys, I am ending this with a routine I want to share with you. So it's called a Smarty routine. In the morning, it would be best if you practice this. 5 minutes silence, meditate, think, think great things in your life. Just try to focus on what you want, what you want to achieve, and बिल्कुल साइलेंस में आप यूनिवर्स को अलाइन करो कि मैं ये चाहता हूँ. Then 5 minutes that segment intending or mind movie, कि मैं आज का दिन, this is how I want my day to go, and build up जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो एलिमेंट्स, फैंसी एलिमेंट्स, build up and make a very great mind movie for the day. Then 2 minutes for self affirmations. Affirmation: affirming yourself that I am great, I am good, I can do anything, I am capable, I am having good potential. So that leads to a very positive mindset. 10 minutes of a good reading, some reading which is giving you wise suggestions, that's very much required to see, to build your perspective in life. 2 minutes of gratitude, like I said, to people around you, to mentors around you, to friends around you, any person who's playing a role in your life. And minimum 15 minutes of some kind of exercise. अगर आपके पास टाइम नहीं है, doing 15 minutes of surya namaskar only is going to take care of your physical fitness. So guys, once you start practicing this, doing this transformations in your life, you will see great changes in your lifestyle, in the ways you are achieving things, and you'll see your life is will be there to see for everybody. Okay, so that was this session. If you have any kind of questions regarding this, you can please meet me at the institute. I have
many other techniques. I have meditative meditation videos, audios. I have certain other techniques for specifically working at one particular problem if we have, because this was not an interactive session, so I could not take suggestions from you or your problems from you. So please meet me and we can work in detail and try to tackle each and every problem of your life. Thank you.